Assalamu alaikum. Welcome to GM Publishers and the book which we are doing today, English of Prep Class. Dear students, today we will learn about small letters but in three parts. Do you know all small letters don't sit the same way on the line? Some letters go up to the sky, जो कि पेज नंबर 5 पर मौजूद है। कुछ लेटर्स स्काई लेटर्स कहलाते हैं और कुछ लेटर ग्रास लेटर्स कहलाते हैं। एंड सम गो डाउन टू द रूट्स। लेट्स लर्न देम वन बाय वन। सो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने स्काई लेटर्स की तरफ। दीज लेटर्स टच द स्काई लाइन। दे आर टॉल लेटर्स। से विद मी, स्काई लेटर्स को आपने ट्रेस भी करना है। B, D, F, H, K, L and T. So students, each letter on the book say and loud. B goes up to the sky. D also touch the sky. F, H, L and T all go up high. So students, all the sky letters also trace very neatly and good way. Now we turn to grass letters. Now look here students, these letters stay on the grass line. Say with me: A, C, E, I, M, N, O, R, U, V, W, X and Z. All these letters sit nicely on the grass line. They don't go up or down. Let's say again together. A to Z, only these short ones are grass letters. अब हम चलते हैं अपने roots letters की तरफ. These letters goes down below the line, just like roots under the ground. Say with me: G, J, P, Q and Y. G go down, J goes down, P, Q, Y all go down into the roots. These are called root letters because they go under the line. So student, आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है पेज नंबर 5 पर. You are doing all the very well.